Assalamu alaikum student and welcome to another lecture of environmental engineering. So first of all we will go through the review of the last lecture. In the last lecture we discussed the basic terms for the water treatment. We discussed the concept of the mass balance approach, and then we discussed different types of the reactors, which include plug flow reactors, batch reactor and continuity flow reactors. Then we have goes through the reaction kinetics, and we have discussed the rate laws, and also we have discussed the order of reactions, and then we performed some numericals related to the order of reactions in chemical reactions and the rate law. So today is lecture number 12, in which we will discuss about water treatment. Okay, so first of all, the water treatment. What is the purpose of the water treatment? The purpose of the water treatment, number one is the protection of human health. That is the removal of pathogens and disease like polio, typhoid are caused by the water treatment. Second purpose of water treatment is the aesthetic, that is the removal of taste, odor and turbidity. Third purpose is the industrial purpose, that is the soft water without oxygen is used as a boiler fed water. If oxygen is present, it creates corrosion and resulting in rusting. And there are many other purposes like water for a swimming pool needs treatment. Okay? So there are different treatment methods, and processes which we will discuss one by one. So that today the water treatment process which we will covering in lecture number 12, that is the coagulation and flocculation process. So before going to the coagulation and flocculation treatment, we will see the conventional surface water treatment for drinking water. So this is basically the process diagram of a conventional surface water treatment for drinking water. Here we have a rapid mix reactor which is known as a coagulation process. Then we have a flocculation process. So after coagulation and flocculation, the water is sent to a segmentation tank where all the suspended particles are removed in the segmentation tank. And after the segmentation tank, the water is passed through the filtration process where all the particles which are not removed in a segmentation process, they will be removed in filtration process, and in the end we will disinfect to kill the pathogens because the water is used for a drinking purpose. So first of all, we will discuss the water treatment. What is the coagulation process? So coagulation is a process or a technique in which the particles which are present in the water are destabilized. ठीक है, destabilized means कि जो भी particle के अंदर charge होता है उसको हम remove करते हैं by doing the coagulation process. So particles in water vary widely in origin, size and concentration. Okay, so some particles are land bases and some are atmospheric bases, like sources like a silt clay, and some are produced by chemical processes in water like calcium carbonate. Particle size vary from 0.005 microns to 100 microns. The particle below 10 microns are known as colloidal particles. Okay, so colloidal particles are the particles which have a size between 0.1 to 10 micron meter. So वो particles जिनका size less than 10 micron meter होता है, that is known as colloidal particles. So mostly colloidal particles in natural water are negatively charged and thus remain in suspension in water due to a mutual repulsion. So the surface charge on the colloidal particle is a major contributor to their long-term stability. Particle instead of settling down repel each other. So in order to deal with the colloidal particle, we have to do two things. The first one is to destabilize the particles by neutralizing the negative charge. Second one, to increase the size of the particles, जो कि उन particles को settle down होने के लिए जो है वो allow कर सके. Now why the colloidal particle do not settle? ठीक है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि colloidal particles का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, that is the charge on the particles. ठीक है, so
Negative charge on the particles. So mostly particles, colloidal particles are negatively charged. This cause particles to remain in suspension. The other very important reason is the large surface area to volume ratio. As you can increase the surface area of an object, it tend to float in a water. So these two reasons are the causes that the colloidal particles are always in suspension in the water. So now how we can remove the colloidal particles? So as we discussed in a previous slide that there are two processes which are very important to remove. The first one is to destabilize the particles by neutralizing the negative charge. ठीक है, coagulation is basically the process जिसमें हम chemical को add करते हैं to remove the charge on the particles. ठीक है, प्लस इसमें हम रैपिड मिक्सिंग करते हैं ताकि जो भी केमिकल हम ऐड करें वो थ्रू आउट द रिएक्टर कम्प्लीटली मिक्स हो जाए. द सेकेंड वन इज द फ्लॉकुएशन जिसमें हमारे पास स्लो मिक्सिंग होती है. फ्लॉकुएशन इज द प्रोसेस इन विच द स्मॉलर पार्टिकल्स combine together to form a big size particles which is known as a flock. ठीक है, so that is why that process is known as a flocculation process in which the small particles are collide with each other and attach with each other and form a bigger size particles which is known as flock. So we use some techniques to increase the particle size so the settlement under gravity can take place. So the first of all, how we can do the coagulation process. So we will add the coagulant. Coagulant is basically जो भी chemical हम use करते हैं for the destabilization of the particles or in the coagulation process, that is known as a coagulant. So we add a coagulant in a water which will remove or destabilize the particles and neutralize the negative charge. When we add the coagulant, here we provide a rapid mixing. So जो भी chemical हम इसमें add करें वो completely reactor में mix हो जाए, and then we will allow the particles to increase their size. And जहाँ पर हम slow mixing करते हैं, जहाँ पर particles जो हैं smaller particles they combine with each other and increase in the size, then we allow the particles to precipitate and trap the impurities settle to bottom. So how to remove the colloidal particles? So सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था, coagulant is the chemical which is added to the water during coagulation process in order to destabilize the charge on the particle and increase the size of the particle to settle under the gravity. So different types के coagulants हम use करते हैं. The first one is the alum. Alum is widely used for the treatment of municipal waters because the natural water have a pH range of 6 to 7. ठीक है, क्योंकि जितने भी आप केमिकल्स ऐड करते हैं ये एक स्पेसिफिक पीएच रेंज के ऊपर जो है वो पार्टिकल को डिस्टेबलाइज और इंक्रीज करती है पार्टिकल साइज के लिए. फेरिक सल्फेट इज यूज्ड वेयर द वाटर हैव अ पीएच ग्रेटर देन 8.5. मोस्टली इंडस्ट्रियल वाटर के लिए हम फेरिक सल्फेट यूज करते हैं. फेरिक क्लोराइड कैन बी यूज फॉर pH if the pH is between 3.6 to 6.5 or it's greater than 8.5, and ferric sulfate is used for if the pH is 3.5 to 9 and it's greater than 9. So now we will discuss that how the coagulant act, कि किस तरीके से जो भी हम coagulant use करते हैं वो किस तरीके से particle को destabilize करते हैं, उनके particle के size को increase करते हैं. सबसे पहले you add the water, you add the alum or any coagulant in the water which will deassociate in water to form aluminum ions and sulfate ions. ठीक है, सो जो भी आप एलम या जो भी आप कोगुलेंट डालेंगे वो पहले डिसोसिएट होंगे अपने आयंस के. देन एल्युमिनियम आयंस कंबाइंड विद नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो अपने बॉन्ड बनाएगा विद नेगेटिवली चार्ज्ड इम्प्योरिटीज या कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर. Third step is the hydrolysis of alum, which results in the formation of aluminum hydroxide and hydrogen ions. ठीक है, so जो alum है that will react with the water and form aluminum hydroxide. It will release sulfate ions and also produce some water and hydrogen plus ions. जैसे कि आपको ये नीचे फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है. So we have impurities present in the water which have negatively charged particles. Then we add alum in the water. Alum को add करने से water it will dissociate into ions. So जितने भी alum के ions है that will react with the negative charge of the particles. ठीक है, negative charge of the particles, and it will neutralize
or destabilize the colloidal particles, and then the small particles will combine together and form a big particle. So hydrolysis of alum, as you can saw in the picture in the last slide, that the hydrolysis of alum produce hydrogen ions in which will drop the pH of the water. ठीक है ना, एंड इट विल, जब आपका pH ड्रॉप हो जाएगा यानी pH एसिडिक साइड पे चला जाएगा, सो इट विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो बेसिकली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड is the particle which will allow the colloidal particles to form the flocculation particles. ठीक है, so the natural alkalinity which will act as a buffer, so पानी के अंदर natural alkalinity present होती है, that is in the form of calcium bicarbonate, so it will produce aluminum hydroxide and other things. So इस तरीके से आपके पास जो है वो जो coagulation का process है वो होता है. So basically aluminum hydroxide की formation की वजह से ये जितनी बेसिक साइड पे आपकी pH होगी, आपके coagulation process या पार्टिकल की डिस्टेबलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से होगी. लेकिन आपको कहा यह जा रहा है कि जब आप कोगुलेंट ऐड करते हैं तो हमारे साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम भी होता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बनते हैं. सो हाइड्रोजन आयंस जो है वो हमारे वाटर की पीएच को एसिडिक साइड पे शिफ्ट कर देती है, जो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन को कम कर देती है. लेकिन अगर वाटर में नेचुरल अल्कलिनिटी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो वो नेचुरली आपके पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को यानी पीएच को बफर करती है, जो भी आपकी पीएच की ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कम करती है और आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करती है एंड अलाउ द पार्टिकल टू डिस्टेबलाइज. सो यही इक्वेशन से हम नेचुरल अल्कलिनिटी ऑफ वाटर को फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पानी में कितनी एक्स्ट्रा एलम डालनी चाहिए टू डिस्टेबलाइज द पार्टिकल्स. ठीक है, जैसे कि आप रिएक्शंस में देख रहे हैं कि हमने इनकी स्टोइचोमेट्रिक रेशियो से जो है वो एलम की डोज कैलकुलेट की है. So for each 1 milligrams of alum, 0.5 milligrams of alkalinity is required. यानी अगर आप 1 ग्राम ऑफ एलम डाल रहे हैं तो आपको 0.5 मिलीग्राम alkalinity रिक्वायर्ड होगी, यानी एक्स्ट्रा आपको डालनी पड़ेगी. ठीक है, ताकि आपके पास हाइड्रोजन आयंस की जो फॉर्मेशन है वो प्रोसेस को रोक ना सके. So now we will see the water treatment plant में किस तरीके से हमारे पास कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन यूनिट्स इंस्टॉल होते हैं. सो हमारे पास सबसे पहले कोगुलेशन का रिएक्टर होता है जहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन होती है पार्टिकल्स की विद द रैपिड मिक्सिंग यूनिट, एंड देन वी हैव अदर रिएक्टर इन विच द फ्लॉकुलेशन प्रोसेस टेक प्लेस. और यहाँ पर हमारे पास स्लो मिक्सिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है. So in treatment plant, coagulation is affected by the mixing of chemicals, that is by rapid mixing to give a good distribution of a chemical throughout the water, and a slow mixing that will allow the contact of the particles, more number of particles to contact with each other. So यहाँ पर अगर हम देखें तो coagulation, flocculation में जो हमारे पास major role play करता है that is the mixing process. ठीक है, सो मिक्सिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको डिफाइन करने के लिए वी हैव टू डिफाइन द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज द जी. सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द फ्लूइड एलिमेंट, और इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. सो बेसिकली जी इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मिक्सिंग. ये किस वेलोसिटी और किस स्पीड से आपने आपने देखा कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन में जो मेजर पोर्शन है दैट इज द मिक्सिंग प्रोसेस, कि कितनी स्पीड से आपने मिक्सिंग प्रोवाइड करनी है फॉर द बेटर अचीवमेंट ऑफ द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द फ्लॉकुलेशन ऑफ द पार्टिकल. सो जी इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग. सो जी इज रिप्रेजेंटेड बाय इज इक्वल टू V1 minus V2 डिवाइडेड बाय द V1 जो है दैट इज द वेलोसिटी of the fluid, V2 is the relative velocity of the stirrer, और जो O है that is the distance between the particles. So flocculation results from the velocity difference in the water which causes the contact between the moving floc masses. Velocity differences also causes shearing stresses along the planes in the water.
So coagulation in water treatment plant of rapid mixing, it is also known as a flash mixing. So coagulation is done by rapid mixing or a flash mixing. So rapid mixing of coagulant is basically, as we discussed, that it will provide a good distribution of the chemical throughout the reactor. It can be achieved by two types, by providing a hydraulic jump or by using a paddle mixers. ठीक है. So detection time आपका rapid mixing का 10 to 20 seconds provide होता है. Speed of rotation that should be between 150 to 150 1500 rpm. Power required is 2 to 5 kilowatts per meter cube per minute, and velocity gradient should be between 300 to 500 per second. स्लो मिक्सिंग यानी फ्लॉक्युएशन प्रोसेस के लिए हमें स्लो मिक्सिंग रिक्वायर्ड होती है. ब्रिंग अ डीस्टेबलाइज पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ फ्लॉक्स. सर्कुलर टैंक्स विद द पैडल ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट. सर्कुलर टैंक्स यूज होते हैं जिसमें हम वर्टिकल शाफ्ट इंस्टॉल करते हैं विद द पैडल्स, और रेक्टेंगुलर टैंक्स भी यूज करते हैं विद द पैडल्स रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट. ठीक है, अगर आपके पास सर्कुलर है तो उसमें वर्टिकल शाफ्ट होगी, और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है, there we can provide a horizontal shaft with the paddle. So area of a paddle, that is 10 to 20% of the vertical cross sectional area of the tank. तो जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा आपके टैंक का, आपके जितने भी पैडल का एरिया, दैट शुड बी 10 to 20% ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक. अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ द फ्लॉक्युएटर्स यूज्ड होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ बैफल फ्लॉक्युएटर्स एंड सेकंड वन इज अ मैकेनिकल floccuator. Let's go through what is baffle floccuator. So baffle floccuators ये होता है कि बेसन के अंदर हम baffles या कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, जब वाटर इस रिस्ट्रिक्शन से होते हुए गुजरता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्लो मिक्सिंग के प्रोसेस होता है. So in the basin the baffles are placed at 0.57 to 1 meter apart. These are seldom employed these days. ठीक है, इसका मेजर डिसएडवांटेजेस ये है कि वी हैव अ लॉस ऑफ एनर्जी इज मोर, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इज प्रेजेंट. मैकेनिकल फ्लॉक्युएटर्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं. मैकेनिकल फ्लॉक्युएटर्स वही जिस तरह से बात की है कि अगर सर्कुलर टैंक्स में है तो वर्टिकल शाफ्ट के अलॉन्ग हम पैडल्स को रोटेट करवाते हैं. अगर रेक्टेंगुलर शाफ्ट टैंक है तो हम हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लगा के उसमें पैडल्स को रोटेट करवाते हैं. और जो एरिया ऑफ पैडल है दैट शुड बी 10 to 20% ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इन द rectangular tank we have provided a horizontal shaft, or along the horizontal shaft we have provided the paddles, and the area of paddle is 10 to 20% of the cross sectional area of the rectangular tank. Similarly in a circular tank we have provided the vertical shaft, and vertical shaft के along हमारे पास पैडल प्रोवाइड है जिसका भी एरिया जो है वो 10 to 20% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कुलर टैंक. The advantages of the mechanical floccuator, that is they have a more flexible in operation, they have less energy losses and low cost of installation. So here are some pictures which are rectangular tank की picture and the industries. इसमें हमारे पास horizontally shaft install हुई है और उसके along हमारे पास पैडल हुए हैं. ये सर्कुलर टैंक है जिसमें वर्टिकल शाफ्ट के along आपके पास पैडल मूव कर रहे हैं. So the other important जो parameter है, that is the amount of the coagulant dose. That the quantities of a chemical ये कितना coagulant का डोज आपने डालना है. ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय परफॉर्मिंग एन लैब एक्सपेरिमेंट्स, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में जार टेस्ट कहते हैं. ठीक है, so the quantities of a chemical coagulants required vary greatly from as low as 1 milligrams per liter to 100 milligrams per liter, depending upon the raw water characteristics. So this required quantity can, however, be determined in the lab through a jar test. The purpose of a jar test is to determine the optimum coagulant dose. Number 2, best mixing speed. Number 3, the best mixing timings for a particular water. So for finding out these optimum conditions, we perform a jar test. So इस तरह का ये ऑपरेटर्स लगता है जार टेस्ट में, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 6 सिलेंडर्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ्लॉक्युएटर्स होते हैं. ठीक है, और हर जार में हम डिफरेंट ये 1 लीटर के जार होते हैं जिसमें हम डिफरेंट डोज ऑफ केमिकल्स डालते हैं और डिफरेंट स्पीड के ऊपर अपने रोटेटर्स को मूव करते हैं. एंड देन वी परफॉर्म द
टेस्ट और उससे फिर हम ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जो है वो कोगुलेंट की ऑप्टिमम स्पीड और ऑप्टिमम मिक्सिंग स्पीड और टाइमिंग्स को फाइंड आउट करते हैं. So the procedure क्या है कि first of all you will measure the pH and turbidity and alkalinity of the raw water. Then you will take 4 to 5 beakers and add 1 liter of a sample water to each. Add varying dose of coagulants. ठीक है, alum in different. For example, if you are using alum, you will add alum in different doses of alum in different beakers and rapidly mix at 1 to 300 rpm for a desired time. यूजुअली अप टू 30 to 60 सेकेंड आपने मूव करना है और डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर करना है डिफरेंट जार्स पर. After 30 to 60 seconds, you will reduce the speed of machine and run the machine on 50 to 20 rpm and gently mix for 15 to 30 minutes. After stirring and settle the sample for at least 30 minutes, number 6 step, you will analyze the sample. Again, you will have to measure its pH, turbidity and alkalinity. If the pH is in desired range, the beaker corresponding to the lowest turbidity gives the optimum dose of the coagulant. If pH is not in the range, that is 4 to 7, you have to adjust the pH and repeat the test again to find out the optimum coagulant dose, जिस पे आपकी pH की रेंज में आए और then और आपके पास coagulant की टाइमिंग्स और डोज भी आ जाएगी. Okay, so now what are the design criteria for designing the coagulation process and flocculation process? So the design criteria is the intensity of the mixing and the detention time. ठीक है, so आपका जो detention time है rapid यानी coagulation process में वो 30 to 60 seconds होना चाहिए और जो आपकी intensity of mixing है that is G, velocity gradient, that is 100 to 300 per second. Similarly, about the flocculation process, the detention time should be equal to 20 to 30 minutes and the G value should be between 10 to 100 seconds. So design of flocculators, so generally जो flocculators होते हैं design होते हैं on the which is based on the mixing intensity. G that is equal to P over mu into V over square root. So P is the power input, okay, that is in watts. Mu जो है वो absolute viscosity of the liquid and V is the volume of the tank. So for rotating pedals, P जो है वो हम find out करते हैं by using this formula which is equal to CD rho VQ area divided by 2. CD is the drag coefficient, ठीक है, normally ये 1.8 to 1.5 से 1.8 for pedals. A is the total area of the pedal in meter square. Rho is the mass density of the fluid in a kg per meter cube. VR is the relative velocity or the velocity differential of pedal in the water. Usually it is taken between 0.7 to 0.8 of the pedal speed. So जो भी आपकी pedal speed है उसका 70 to 80% आपके पास relative velocity और आ जाएगी pedal की. और जो velocity of the pedal है वो हम find out करते हैं by using this formula that is 2 pi rn where 2 pi n जो है that is the distance of a center line of a pedal from the shaft. R जो है वो आपके पास resolution of a pedal per second है. ठीक है, so distance of center line of the pedal from the shaft and R is the revolution of pedals per second. So for baffle flocculators अगर आप use करें तो उसके लिए भी हम जो G है that will be calculated by using this formula which is equal to the square root of acceleration due to gravity. H is the head loss in flocculators, V is the kinetic viscosity and TD is the detention time in the flocculators. So now we will perform or design we will perform some numericals in which we will find out, we will design the flocculator in coagulation and also we will calculate the chemical dosage used for the coagulation process. So the first numerical is to determine the theoretical power required to achieve a G value of 50 per second in a tank with a volume of 2800 meter cube. Assume a mu as 1.07 raised to power minus 3 Newton into second per meter square at 20 degrees Celsius. The next numerical is a plant treating a 30,000 meter cube per day of water uses
30 milligrams per liter of alum. Calculate the daily chemical consumption and the required dosage of calcium hydroxide lime, assuming that there is no alkalinity present in the water. ठीक है, सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है एलएम का डोज. एलएम का डोज हमें गिवन है विच इज़ 30 मिलीग्राम्स पर लीटर. इसके यूनिट्स को कंसिस्टेंट बनाना है विद द फ्लो, क्योंकि हमने डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द एलएम रिक्वायर्ड करना है. So we know that 1 milligrams per liter equal to grams per meter cube. So daily dose of alum, that will be equal to the dose of alum into flow. So that is 390 kg per day. 390 kg per day of alum is added daily to treat a flow of 30,000 meter cube per day. ठीक है, ये तो हमारा पहला आ गया कि कैलकुलेट द डेली केमिकल कंजप्शन. वो हमारे पास डेली कितना आ गया, 390 kg per day of the alum is used to treat 30,000 meter cube per day of the water. The second part of the question कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी रिक्वायर्ड डोजेज ऑफ लाइम को रिक्वायर्ड होगी टू मेंटेन द एलिनिटी ऑफ द वाटर. सो फॉर दैट पर्पस यू विल राइट द इक्वेशन दैट इज सल्फेट एलम प्लस द कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 600 इसका आपने मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है. यू विल सी दैट कि 6 kg ऑफ एलम रिक्वायर्ड 196 kg ऑफ calcium hydroxide. 1 gram of alum will require this much of calcium hydroxide. 390 के लिए हमें 109.2 kg per day of calcium hydroxide should be added in the water to maintain the alkalinity of the water. So the next three numericals are for the practice. So you can find out, you can calculate or design these numericals by using the simple formulas which are given in the last few slides. So आप इसको यूज़ करें, कैलकुलेट करें, and then we will discuss it in the question answer session. Thank you.